So let us start with our next sum. We are going to come to page number 119, problem number 8. Page number 119, problem number 8. Jeevan Jyoti Art Circle, a newly established concern, has presented. ये भी क्या है? It is a newly established concern. They have told subscription outstanding for the year 5,000, depreciate furniture, full amount of admission fees and 50% of donations are to be capitalized. You are required to prepare income and expenditures and the balance sheet as on that particular date. Same way we are going to prepare what? We are going to prepare income and expenditure and balance sheets, which is there in front of you. Now we'll start with our sum, with our adjustments. The first adjustments given to you was subscription outstanding for the current year is 5,000. Let us see what is a subscription given to you, 40,000. So let me write over here, by subscription they have told us 40,000, 5,000 is outstanding, so I will add outstanding. Outstanding doesn't means liability only, it's a income outstanding. Subscriptions ये मुझे मिलने वाला है, it is receivable, and anything receivable in future is your asset. Anything payable in future is a liability, anything receivable in future is your asset. So outstanding subscription, okay, that's 5,000 outstanding subscriptions. Let me start with the second adjustment. They have told you depreciate furniture. They haven't told you the date of purchase of furniture. अगर हम लोग को फर्नीचर का डेट दिया रहता तो हम डेप्रीसिएशन उस हिसाब से कैलकुलेट करते. यहाँ पे डेट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पूरे साल का डेप्रीसिएशन निकालेंगे. फर्नीचर वैल्यू इज 12,000 एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 10%. सो लेस depreciation 10% मतलब 1,200. So in your outer column 10,800. Okay, second effect on the expenditure side, you can write anywhere you want to. एक ही है depreciation, तो directly लिखता हूँ मैं इधर, to depreciation on furniture. ठीक है, डायरेक्टली लिखा मैंने वहां पे 1,200. Okay, next is what given to you, full amount of admission fees and donations 50% capitalize करना है. So admission fees capitalize करना है. Now over here you will write opening capital fund which is not there with you at all. Okay, है ही नहीं हमारे पास, तो मैं उधर कुछ लिख नहीं रहा हूँ. You can just put a dash over there. Okay, if you want you can just put a dash because we don't have. and उन्होंने बोला है एडमिशन फीस जो है वो पूरा कैपिटलाइज करो. मतलब कितना है एडमिशन फीस, 22,000, और डोनेशंस का 50% ही बोला है. सो डोनेशंस का 50% मतलब डोनेशन का अमाउंट देखते हैं 18,000 है, तो उसका 50% हम लोग को कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है. ऐड कैपिटलाइज्ड 9,000. Okay, and over here I will say add donation. ठीक है, कितना donation, 9,000. So if you want you can just add it and write the amount. नीचे ही लिख सकते हो, otherwise you can leave it. surplus सब आने के बाद you can directly add it and write the amount. So right now I am writing it. 31,000. ठीक है, 29 plus 9,000 that is 31,000. ओके, एडजस्टमेंट्स देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गया हमारे. चलो आते हैं हमारे रिसीट साइड पे. एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन तीनों हो गया है. पेमेंट साइड पे फर्नीचर वी हैव ऑलरेडी डन. स्टेशनरी इज अ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. स्टेशनरी अमाउंट इज 4,000. स्टेशनरी के बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट अमाउंट इज 2,600. ऑफिस रेंट के बाद न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स बोला है उन्होंने. वॉट एवर दे गिव यू, यू जस्ट राइट इट.
newspapers and periodicals. Okay, the amount of newspaper and periodicals are 300. Next, telephone expenses 560. टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद इन्वेस्टमेंट बोला है, इन्वेस्टमेंट इज असेट 23,000. देन दे हैव गिवन यू कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. चलो दोनों भी लिख देते. कैश इन हैंड is 7540 and cash at bank that is 30,000. Okay, so now let us close now. हो गया ना हमारा कंप्लीट. तो अभी देखते हैं. तो देखो ना अभी इधर जस्ट इट इज मेंशन की क्रेडिट साइड. बहुत ही सिंपल सम था ये हमारे लिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ये सम में. इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. 54,000. Let us see what is the surplus that you are getting. 54,000 minus okay, so that is 45,340 is my surplus. लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, to excess of income over expenditure. Okay, in bracket we will write surplus. Okay, always remember ये surplus है हमारा जो हमें डेबिट साइड पे मिलता है. Okay, so now this surplus I will add it. Add surplus 45,340. सरप्लस ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में you will get 76,340, 76,340, 76,340. Your balance sheet is tally.